Right, so we are going to do today's problem. Right, this 171722 minimize, minimizing Hamming distance after swap operation. Right, this is a medium level question. So, question says you are given two integer array source and target, both of length and you are also given an allow swap where allowed swaps array I is equals to AI and BI. Okay, indicate that you are allowed to swap the element at index AI and index BI. So zero index array of array source. Note that you can swap element at a specific pair of indices multiple times and in any order. Okay, मतलब दो इंटीजर दे रखे हैं, इंटीजर array दे रखे हैं, सोर्स और टारगेट, दोनों की लेंथ n है और अलाउड स्वैप्स ये है। राइट, अब हमें स्वैप दे रखा है, इंडेक्स अलाउ कर रखा है स्वैप करने का, इंडेक्स आई और इंडेक्स बी का। राइट, so the Hamming distance of 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 the same length, two arrow of the same length, source and target, is the number of position where elements are differently. Like formally I equals to 0 I n minus 1 where source array I is not equals to target I। मतलब वही है कि सोर्स टारगेट ये नॉट इक्वल है, तो हमें रिटर्न करना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। दिस minimum having distance of source and target after performing any amount of swap operation। right, अब ये दे रखा सोर्स 1234, टारगेट 2145 है और अलाउड स्वैप है 0123, आउटपुट 1 है। तो सोर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वेज: swap indices 01 source 2134, swap indices 213 means 2 and 3 is 2143। okay, Hamming distance of source target is 1 as they differ in one position, so index 3। Okay, example 2 source 1234 target 13। right, constraint देख लेता हूँ एक बार, n को source dot length is equals to target dot length and 1 at 10 raised to power, okay, 1 n at 10 raised to power 5 तक। allowed swap array I dot length equals to 2। okay, acceptance range भी 60.3 है। okay, then we how like, right, so how we will do a approach like, right, so इंट्रोडक्शन में कैसे जाएंगे हम, या इंट्रोडक्शन का कैसे सोचेंगे। लाइक इंट्रोडक्शन का दो इंडिसेस दे रखे हैं जो हमें कनेक्टेड करने हैं थ्रू allowed swaps। right, so we can do our like rearrange elements among them pretty, like swaps can be changed and repeated। right, so my approach is like, we firstly use union, we have union find, right, DSU, to group indices that are connected via allowed swaps। right, and secondly we have for like each component we have collect or source, right, value into a frequency map। right, and then we go to third, like for each index in the component check if target target array I exist in the frequency map। agar if you say yes, then it's a match, right, and decrement its count, if no, then it contributes to Hamming distance। right, and if you say why this works, right, because within a component we can fully rearrange swap element so we greatly match as many as possible। right, so
And then we have to, like, what will be the time complexity is big O n plus m, n plus m into alpha n है, and space complexity big O n, right? This is the, and now we have to do write the, so we have to write the code, right? That's 1 second. So we have, here we go, class solution, right? तो पहले तो private int parent, right? And now we have to write private int find the integer x, right? अब parent x not equals to x करेंगे, so if parent array x is not equals to x, right? And now we have to parent array x equals to find parent x. Now it will go and return कर देते हैं, return parent x. Okay, now एक और private डाल दें, private void unite integer a integer b. So we have to parent find a equals to हो जाएगा find b के, ना? right. अब ये था कि हमने यहाँ पर इंटीजर कर दिया। अब 1 सेकेंड यार, ये हैंग बहुत कर रहा है। तो यहाँ पर एक इंटीजर n ले लेते हैं, तो सोर्स डॉट लेंथ, राइट, हम पेरेंट का इक्वल्स टू न्यू इंटीजर n। अब एक लूप चलाते हैं जिसमें पेरेंट आई के लिए, सो फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई अंदर जो n यार, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट? तो पेरेंट अरे आई इक्वल्स टू आई कर देते हैं, राइट? अब हमें स्वैप करना है, तो फोर इंटीजर अरे swap is allowed swaps, unite करते हैं swap 0 और swap 1 को, which I earlier, right? अब क्या कहेंगे हम कि अब हमें मैप वैप का करना पड़ेगा कि ग्रुप सोर्स वैल्यू बाय देयर कंपोनेंट रूट करना पड़ेगा। लेट मी, राइट, सो मैप ले लेते हैं, मैप इंटीजर मैप यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक, इंटीजर, राइट, इंटीजर होगा, ग्रुप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप एंड फोर
int I equals to 0, I and I increment. Let me see. राइट, अब क्या करेंगे हम कि int रूट को इक्वल्स टू फाइंड आई कर देंगे, नॉट राइट। अब हमें करना क्या होगा कि अब एक और न्यू हैश मैप ले लेते हैं, ग्रुप्स डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट रूट के न्यू हैश मैप। न्यू हैश मैप हो गया, डॉट लाइक मर्ज सोर्स अरे आई वन। फिर से यार, यार स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटीजर एरिया, इंटीजर में क्या करूँ, सम राइट। अब यहाँ तक कर दो, अब इंट हेमिंग का करते हैं। इंट हेमिंग एक सेकेंड जस्ट इक्वल्स टू 0 और लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एन आई इंक्रीमेंट राइट। सो इंट रूट इक्वल्स टू फाइंड आई हो जाएगा। लेट वी लाइक, मैंने ये पहले भी किया हुआ है। सो अब नो मैप इंटीजर इंटीजर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ग्रुप्स नॉट गेट कर दे रूट, रूट राइट। इफ फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफॉल्ट टारगेट एरे आई 0 टू 0 राइट। अब तक हो गया। अब इसके बाद मुझे मर्ज करना पड़ेगा। सो फ्रीक्वेंसी डॉट लाइक मर्ज टारगेट आई -1 राइट। और अब इंटीजर सम, अदरवाइज अगर मैच नहीं हुआ तो एल्स हैमिंग टेस्ट हो जाए। अब कहाँ तक है, let me remove this। We have to return hammock dist right, say run the code. Now it's accepted, submit the code. 282 days. Okay, thank you very much.